to the NEET story after all the developments that are taking place in Bihar, including the arrests and the confessions. We are now getting to know that Maharashtra as well, specifically in Nanded, the ATS has now detained 2 teachers. One of the arrested is said to be hailing from Latur and the other from Solapur. Both are from Zilla Parshad schools. Both of them have been released after investigation by the Nanded unit of the Maharashtra ATS. According to our sources, they are probably going to be questioned again. Meanwhile, the NEET UG retest for 1,563 candidates who received the grace marks is underway. It will continue through the course of the day and it will conclude this evening. Let me open up this conversation to my colleague Nitish. Nitish, सबसे पहले एक करके चर्चा करते हैं. सबसे पहले अभी बिहार इन्वेस्टिगेशन में सबसे लेटेस्ट अपडेट क्या है? स्टूडेंट ने बोला है कि हाँ जी मुझे टेस्ट के आंसर्स एक रात पहले मिले थे. उसके बाद क्या हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए ऋषभ, सबसे पहले जो लेटेस्ट जानकारी महाराष्ट्र से है वो मैं आपको बता दूं कि कल रात जो है नांदेड़ एटीएस ने 2 टीचर्स को जो है डिटेन किया था, जिन्हें पूरी रात भर जो है जिनके साथ क्वेश्चनिंग हुई और उसके बाद उन्हें जाने दिया है. ये प्रोब जो है एक तरह अलग तरीके से जब सीबीआई कर रही है, उसके साथ साथ ही बाकी जो स्टेट एजेंसीज है अलग अलग एटीएस और बाकी अलग स्टेट्स के, वो भी ज्वाइंट एक ऑपरेशन कर रही है, चीज़ों को सर्च कर रही है, खंगालने की कोशिश कर रही है. जहाँ यहाँ पर 2 टीचर्स के साथ क्वेश्चनिंग हुई, उन्हें रिलीज किया गया, वहीं 2 से 3 लोग जो और है वो अलग अलग स्टेट में निशानों पर है. जहां आज बिहार में एक स्टूडेंट ने ये चीज़ को लेके यहाँ पर ये बात स्वीकारी है कि उन्हें क्वेश्चन पेपर एक रात पहले जो है मिल गई थी. इसी चीज़ को लेकर और जो जिन स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिले, जिन स्टूडेंट्स ने इस तरीके के स्कैम में हिस्सा लिया है, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की. पूरी जो है शिकंजा अब धीरे धीरे कसता जा रहा है. महाराष्ट्र की बात मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में नांदेड़ की एटीएस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई जो है की गई थी. ओके, इसमें 2 टीचर्स को डिटेन किया गया था. ऑलराइट, सो नितिश, व्हाट इज ऑब्वियस इज दैट वी हैव वन purported confession, and the reason I say purported confession is because eventually these matters have to go to the Supreme Court, and the Supreme Court has to then make a judgment call, and I'm sure they are being internally examined by the NTA as well. And if indeed there seems to be a semblance of indication of a student saying that he had access to the paper the night before and was asked to memorize the answers, then that means that a paper leak indeed took place. Surely greater alacrity, more urgent action is required on this than what we are seeing. The police are currently cracking down in 2 places. Now you got the update from Maharashtra and from Bihar. Now, ladies and gentlemen, what happened? The basic case point were these 6-7 students of the same center, all of which got maximum marks. The computation was that they all received maximum marks due to grace marking. Now, here's an interesting development, that the NTA ordered a retest of these 1,563 students, and that retest is currently underway. Here's the information that we have got of the retest that is currently underway. 70 students have not appeared for the retest in the center in Balod. So 185 candidates were part of the 1,563, 70 of which have not appeared. Only 115 have reappeared for the exams. Now let me get Nitish back into this conversation. Nitish, 70 student exam देने नहीं आए हैं. Now इनके बड़े कारण हो सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं लगती है कि उनको एग्ज़ाम फिर से देना है, वो स्ट्रेस में हैं, वो एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन और भी कारण हो सकते हैं. अभी कुछ पता चला है कि ये स्टूडेंट हैं कौन? जी बिल्कुल, देखिए जैसे आपने कहा कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अनेकों कारण हो सकता है जो पहले जो एग्ज़ाम होने वाले थे या एग्ज़ाम हुए जिसके रिजल्ट्स आए थे, उसको लेकर काफ़ी जो बच्चे हैं उनका मनोबल जो है एक तरीके से टूट गया है. जिन्होंने रिजल्ट देखे, जिनके सामने स्कैम आया है, उसके बाद से अधिकतर सिर्फ बच्चे नहीं, बच्चों के जो माता पिता है जिन्होंने बच्चों के साथ मेहनत की थी, उनका मनोबल टूट गया है. ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इतने बच्चे जो है अपीयर नहीं हुए एग्जाम के लिए. People embracing the authenticity of our examination process. Rajat is also joining us on the broadcast. Rajat ji, 70 of these students who have not appeared for these examinations, what do you think? क्या हुआ है?
Yes, NEET UGC recent is currently underway. The examination center has been changed in Chandigarh. Balod Hoba, students have not appeared in the particular center for the retest in Balod. Out of 185 students, only 115 have appeared for the examination. Okay, so again, 70 people in Balod in which the center has been changed have not reappeared for the test. Now, obviously, they've studied hard to give the test the one time. You'd think they would obviously be willing to give the test the second time, but there can be many reasons. Sometimes it is a logistical reason. Sometimes you don't want to participate. You've dropped your plans. It can happen. Maybe you don't want to get in the controversy of waiting to give the test again next year. There can be many reasons not to give the test. It will only be speculative to suggest that only the students who therefore were privy to information regarding the question paper are the ones who have willfully chosen not to reappear. But of course, in the middle of such controversy, suspicions will remain. Rajat, thank you. Meanwhile, some students who did appear for the NEET UG entrance examination have spoken about the irregularities. Let's listen in. NEET, according to my views, there should be no re-NEET because we have scored this many marks because of so much of dedication and hard work. Only the students who have scored below 600 are wanting for re-NEET. But what about the students who have scored 600 above? They have scored by doing dedication and so much of hard work. It won't be possible to score good after a gap of 1.5 months if there is a re-NEET. It's like playing with our futures. So we want justice. There should be no re-NEET. क्या कहेंगे, अब तो जो चल रहा है वो अजीब हो रहा है. हर जगह चीटिंग हो रही है. कुछ समझ में ही नहीं आ रहा. पिछली बार अच्छा एग्जाम गया था, फिर पेपर लीक बता दिया, हमारे सेंटर का मतलब ये बिल्कुल कैंसिल कर दिया. एकदम पता चल रहा है कि कल एग्जाम है. दोबारा जैसे पेपर देने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं परिवार में भी और आप भी कहीं 10 दिन में दोबारा तैयारी नहीं हो पाती जी सर. अब तो क्या कहें, हमारे सेंटर पे डबल एग्जाम दिया गया था, मतलब डबल पेपर दिया गया था. तो क्या लगता है आपको, कहाँ कमी है? कमी तो इनके उनमें ही है. डिसिप्लिन है ही नहीं कहीं भी. तो आज पेपर दे रहे हैं, तैयार हैं आप? करके तो आए हैं तैयारी, और तो जो होगा वो देखा जाएगा. Okay, you heard the story. It cuts both ways. A person who says, listen, I didn't cheat. I worked really hard for this examination and got good marks. It's like climbing Mount Everest and being told, due to a technicality, we're asking you to climb it again next month. That's not fair. At the same time, others are saying, look, something dodgy has taken place. And the reason is such a serious problem because both are right. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.